Good morning to all. लास्ट क्लास में हम लोग शायद गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे थे और गोल्ड स्टैंडर्ड के फंक्शन पे थे हम लोग। क्या क्या हम लोगों ने फंक्शन लिखा था? पहला फंक्शन शायद हम लोगों ने लिखा था, पहला जो फंक्शन था वो क्या था? टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ करेंसी। तो ये जो टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ करेंसी है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इकोनॉमी में ये जो कह रहा है ये पॉइंट कि आपकी इकोनॉमी में जो करेंसी अंडर सर्कुलेशन होगा या जो करेंसी आपकी इकोनॉमी में मार्केट में जाएगी, दैट विल ओनली बी ऑफ द वैल्यू ऑफ द गोल्ड व्हिच इज अवेलेबल विद द सेंट्रल बैंक, उससे ज्यादा नहीं। जितना गोल्ड का वैल्यू सेंट्रल बैंक के पास है, उतने ही वैल्यू की करेंसी भी मार्केट में फ्लोट करेगी, मार्केट में सर्कुलेट करेगी। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि बैंकों के पास जो क्रेडिट क्रिएशन का अधिकार है, जो उसका फंक्शन है, वो फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन एक्चुअली में कैश से नहीं होता। क्रेडिट क्रिएशन बुक्स में होता है, डेबिट और क्रेडिट करने के बाद। राइट? क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ये नहीं हुआ कि द क्रेडिट और द लोन हैज बीन ग्रांटेड टू समबडी इन कैश ऑलवेज। जब हम लोग क्रेडिट क्रिएशन की बात करते हैं तो क्रेडिट क्रिएशन का मतलब हुआ कि द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट थ्रू डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन चूंकि क्रेडिट क्रिएशन यहां पर बैंकों का फंक्शन है, लेकिन गोल्ड से पूरी इकोनॉमी को आप रेगुलेट करते हैं, इसलिए बैंकों के साथ भी प्रॉब्लम यह है कि वो क्रेडिट को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दैट क्रेडिट व्हिच द बैंक इज सपोज्ड टू क्रिएट इज नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय द गोल्ड रिजर्व्स। इसका एक एडवांटेज ये है कि फिड्यूशियरी जो करेंसी है उसको आप मार्केट में नहीं लाएंगे। फिड्यूशियरी करेंसी कहने का मतलब क्या हो गया? जिसके अगेंस्ट में गोल्ड रिजर्व्स को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो गोल्ड रिजर्व इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। तो एक तो फंक्शन ये था कि ये रेगुलेट करता है किस चीज को? वॉल्यूम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन को। पॉइंट नंबर 2 हम लोग लिखेंगे, to maintain the stability of exchange rates. Point number 2 is to maintain the stability of exchange rates. सारे लोग आई कार्ड पहन लो। जो लोग आई कार्ड में नहीं है वो लोग आई कार्ड पहन लीजिए। सारे लोग आई कार्ड पहन लीजिए जो लोग आई कार्ड में नहीं है। To maintain the stability of exchange rate, externally, gold standard aims at regulating and stabilizing the exchange rates between the gold standard countries.
stabilizing the exchange rates between the gold standard countries. Full stop. This function is referred to as the international aspect of gold standards. The international aspect of gold standard full stop. Under gold standard, every member country fixes the value of its currency in terms of certain weight of gold, generally an ounce को ब्रैकेट पे डालिएगा, given purity, देखिए पॉइंट क्या कह रहा है कि अब तक हम लोगों ने बात किया कि गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड, आखिर गोल्ड का काम ये फॉरेन एक्सचेंज या इंटरनेशनल ट्रेड में कहां पर है। तो दूसरा फंक्शन है, ये गोल्ड के फंक्शन को इंडिकेट करता है और गोल्ड के इंपॉर्टेंस को शो करता है। बहुत सारी कंट्रीज, गोल्ड स्टैंडर्ड कंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 शब्द है, गोल्ड स्टैंडर्ड कंट्रीज। इसका मतलब क्या? सपोज करें कि दुनिया भर में 100 नेशंस हैं और इन 100 नेशंस में से केवल 20 नेशन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया। सिर्फ 20 नेशंस ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया। तो ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करेगा या उसको रेगुलेट करेगा, उसको डिटरमिन करेगा, वो पूरे के पूरे 100 देशों में नहीं होगा, वो सिर्फ 20 देशों में होगा जिन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया है। बाकी जगहों पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इन गोल्ड स्टैंडर्ड कंट्रीज की सरकारों का काम क्या है कि वो अपने अपने देश की करेंसी का वैल्यू गोल्ड के टर्म्स में फिक्स करेंगे, या गोल्ड के टर्म्स में वो अपनी अपनी करेंसी का वैल्यू फिक्स करेंगे, राइट। अब ये 20 जो देश हैं, जो कि मैंने एक अज्यूम्ड आंकड़ा लिया, क्या हर देश अलग अलग वेट से अपनी करेंसी को एसोसिएट करेगा? द आंसर इज नो। कॉमन वेट होगा। 20 देश में कॉमन वेट ऑफ गोल्ड होगा और कॉमन प्यूरिटी होगी। कॉमन गोल्ड, कॉमन प्यूरिटी, तभी जाके वो कारगर होगा, अन्यथा वो कारगर नहीं होगा। अगर देशों ने अलग अलग वेट अडॉप्ट कर लिया और अलग अलग प्यूरिटी के साथ किया, तो एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं होगा। वो एक्सचेंज रेट का जो डिटर्मिनेशन सरकारों ने किया वो मीनिंगलेस होगा। तो उसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, रिलायबल बनाने के लिए
ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग क्या करें, प्योरिटी को कॉमन रखें और वेट को कॉमन रखें। अब क्या होगा, जब ऐसा हो गया तो सरकारें क्या करेंगी कि उस करेंसी के कितने, उस करेंसी के टर्म्स में यानी कि गोल्ड के टर्म्स में उस करेंसी का वैल्यू फिक्स होगा। अब जो ट्रेड होगा उसी हिसाब से होगा, लेकिन उसमें एक शर्त भी है। शर्त क्या है कि जितने भी गोल्ड स्टैंडर्ड कंट्रीज हैं वो ये अंडरटेक करती है, अंडरटेक मतलब ये शपथ लेती है। क्या शपथ लेती है कि भाई हम अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ गोल्ड और गोल्ड को बाई और सेल करें, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ गोल्ड को बाई करेंगे और सेल, लेकिन किस रेट पे, उसी रेट पे जिस रेट को उस गोल्ड के टर्म्स और प्यूरिटी के हिसाब से, वेट के हिसाब से हमने फिक्स किया, ऑफिशियली डिटरमिन्ड रेट। समझ गए? इससे क्या हो गया, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी आना स्वाभाविक है, एक्सचेंज रेट स्टेबल होगा। एम आई क्लियर क्लास? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखेगा 10 अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड, 10 अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड a gold reserve is maintained for two purposes. Number A, as backing for note issue, backing for note issue, or B, to cover a deficit in the balance of payment, to cover a deficit in the balance of payment and thus to maintain the stability of exchange rates. ये जो आखिरी में जो पॉइंट लिखा हम लोगों ने पॉइंट बी, क्या कह रहा है, हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा ना? क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द समेशन ऑफ बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल। And similarly, balance of current account comprises of three balances. One is balance of trade, followed by balance of invisibles, and finally by balance of unilateral transfers. Now, what is balance of capital account? Balance of capital account represents how much a country owes or the assets and liability of the country. So balance of payment basically is an accounting presentation in the form of a statement which reveals how much a nation needs to take from other nations, or what is the actual amount which is to be paid and the actual amount which is to be received from n number of nations or from the nations from whom we are trading. So now suppose if a country has a deficit in its balance of payment, if a country has a deficit in balance of payment, तो हम लोग ये कहते हैं कि करेंसी डिवैल्यूएशन एक बहुत बढ़िया और एक लास्ट तरीका है जहां से हम लोग अपने डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट को दूर कर सकते हैं। सुनना इस लाइन को ध्यान से, क्या कहा मैंने? बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट
एक्सेसिव डेफिसिट, अनकंट्रोल्ड डेफिसिट को ठीक करने का एक लास्ट जो तरीका बताया गया, दैट तरीका वाज कि भाई हाउ वी कैन devalue the currency. What is the amount or what is the extent of devaluation of the currency? Right? These two terms are misinterpreted. They are used as synonyms. Which two terms? One is devaluation of the currency and the other one is depreciation of the currency. These two are misinterpreted and taken to be as synonyms. But the fact is that they are totally different from each other. Devaluation of a currency is something else. Depreciation of a currency is something else. Depreciation of a currency refers to the fall in the value of a domestic currency in respect to its foreign currency. This is called depreciation. But when you talk about devaluation, devaluation of a currency refers to a fall in the intrinsic value of the currency. The term which I am using is intrinsic value. Right? Now, what is this intrinsic value? As you all know, that gold is kept as reserve for the purpose of issuance of the currency. For the purpose of issuance of the currency. Now, how much gold reserve is to be kept? How much gold reserve is to be kept? Right? So, जैसे मैंने कहा कि if your country is facing a problem of deficit balance of it, if your country is facing a problem of deficit balance of payment, and that problem is severe, the country or the nation or the government is finding it difficult to settle its deficit balance of payment. उसका नतीजा ये हो रहा है कि उसके एक्सचेंज रेट पे प्रभाव पड़ रहा है, उसकी करेंसी फॉल करती जा रही है, उसकी करेंसी का सप्लाई मार्केट में बढ़ता जा रहा है, इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और उसको कोई खरीदने वाला नहीं है. राइट? तो होगा क्या? आप करेंसी डिवैल्यूएशन पे जाइए. किस पे जाइए? करेंसी डिवैल्यू. अब ये करेंसी डिवैल्यूएशन क्या हो गया कि जो करेंसी, सपोज कीजिए कि आपके इकोनॉमी में जो करेंसी अंडर सर्कुलेशन है उसके अगेंस्ट में आपने 80% सोना रखा है रिजर्व. कितना परसेंट सोना रखा है आपने? 80%. यानी कि 100 रुपए अगर आप सर्कुलेट कर रहे हैं तो 80 रुपए के बराबर आपने उस 100 रुपए के नोट के अगेंस्ट में सोना रखा है. क्लियर है? तो ये जो 80 रुपए का सोना आपके पास है, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू. दिस कॉल्ड इंट्रिंसिक. वो जो 100 रुपए का नोट जो मार्केट में है, जो हमारी आपकी जेब में है, उसका एक्चुअल वैल्यू वर्थ ₹80 of gold. Is worth ₹80 of gold. This is what the intrinsic value of a currency is. Right? Now because of severe deficit balance of payment, wherein the government is helpless and finding it very difficult to settle its liabilities, the government will go in for reducing the intrinsic value. Reducing the intrinsic value. How? Now the government, along with the central bank, will say that, okay, fine, we are not keeping 80% of gold. We are अब हम लोग 70% गोल्ड रखेंगे. कितना परसेंट गोल्ड रखेंगे? 70%. अब क्या हुआ इसमें? 10% गोल्ड क्या हो गया? फ्री हो गया. 10% गोल्ड क्या हो गया? फ्री हो गया. जो सेंट्रल बैंक निकालेगा और तुरंत किसको दे देगा? सरकार. राइट? अब क्या हुआ? उस 10% गोल्ड रिजर्व को सरकार इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में जाके बेचेगी, पैसा आएगा और डेफिसिट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसको सेटल करेगी. समझ आया? दिस इज कॉल्ड what? Devaluation of the currency. This is called devaluation. This is not depreciation. This is devaluation. तो devaluation का मतलब इसलिए मैंने जो वर्ड यूज किया, that is कि वो decline in the intrinsic value of the currency. इसीलिए वो पॉइंट शायद अब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो एक बैकिंग है किस चीज के लिए? डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए. सरकारों को पता है, इंटरनेशनल जो भी कम्युनिटी है, जो भी कंट्री है, उसको पता है कि भाई इस नेशन के पास गोल्ड रिजर्व है, ठीक है, और उस गोल्ड रिजर्व का इस्तेमाल कर सकता है वो किस चीज के लिए? डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटल करने के लिए. क्लियर है? हाँ बोलो.
डिप्रिशिएट करके वैल्यू को, वो तो एक्सपोर्ट को ना इंक्रीज करेगा। हाँ ठीक है, वो तुम्हारी बात हम समझ गए, लेकिन इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है ना कि होगा ही होगा। आखिर अब तक जो काम नहीं हो पाया, अब तक इतना डेफिसिट हुआ ही क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट? अब तक तुम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाए, तो अब डिप्रिशिएट करके तुम मतलब क्या कर लोगे कि बढ़ जाएगा एक्सपोर्ट? नहीं, मतलब ये फैक्ट है। अगर ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। तो अचानक से तुम्हारे करेंसी डेप्रिसिएशन से भी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा थोड़ी ना ऐसा। एक्सपोर्ट बढ़ना होता, सरकार की नीति से बढ़ना होता, तो वो तो पहले ही बढ़ गया होता। ये लास्ट उपाय है। करेंसी डिवैल्यूएशन इज द लास्ट उपाय। उसके पहले सारा हथकंडा सरकार ने यूज कर लिया, उसके बाद ही करेंसी डिवैल्यूएशन होता है। 2 बार हुआ है। अच्छा खैर, हम लोग पहले बढ़ते हैं आगे। अब एक हेडिंग दे दीजिएगा, ऑटोमेटिक वर्किंग ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। ऑटोमेटिक वर्किंग ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। The most important feature of the most important feature of the gold standard is that it is an automatic standard. Full stop. It can operate automatically without interference from the monetary authority, without interference from the monetary authority. Full stop. In other words, under international gold standard, under international gold standard, comma, the equilibrium in the balance of payment, BOP लिख लेना short में, the equilibrium in the balance of payment of the gold standard countries, equilibrium in the BOP of the gold standard countries, कहां से? In other words, under international gold standard, the equilibrium in the balance of payment of the gold standard countries is automatically achieved through gold movements. Full stop. This automatic or self-adjusting mechanism can be explained by the theory of gold movements. Full stop.
थ्योरी ऑफ गोल्ड मूवमेंट को अंडरलाइन कर दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, the country with relatively high relatively high cost price structure loses gold while the country with a relatively low cost price structure gains gold, full stop. In other words, countries with deficit balance of payment will experience gold outflow and countries with surplus balance of payment will have gold inflow. नीचे लिखेगा, the disequilibrium between these two, the disequilibrium in the balance of payment, the disequilibrium in the balance of payment will be automatically corrected through the mechanism of gold movement. Full stop. This can be explained by assuming two countries, namely A and B. Two countries, namely A and B. Full stop. A is supposed to have
A is supposed to have a deficit balance of payment whereas country B is having a surplus balance of payment. अब देखिए गोल्ड स्टैंडर्ड का जो हम लोगों ने यूज किया, उस गोल्ड स्टैंडर्ड का यूज हम लोगों ने किस लिए किया कि जो कंट्रीज के बीच में बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उस बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिसइक्विलिब्रियम है, क्या डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब balance of payment will be in absolute balance, that is neither export will exceed import nor import will exceed export. तो ये जो हम लोगों ने लिखा पॉइंट कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसमें जो डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम कहने का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिसइक्विलिब्रियम, उसको हम लोग रिजरेक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। कैसे? थ्रू द मूवमेंट ऑफ गोल्ड, थ्रू द मूवमेंट ऑफ गोल्ड। क्या लिखा हम लोगों ने कि वैसी कंट्री जिसके पास डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जिसके पास क्या है? डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, उन कंट्रीज में आप ये पाएंगे कि वहां पर गोल्ड का आउटफ्लो होगा। गोल्ड का क्या होगा? आउटफ्लो। और जिन कंट्रीज में गोल्ड का इनफ्लो होना है, उस कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस होना। क्या होना? सरप्लस। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट मेक्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट? व्हाट मेक्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन डेफिसिट? द आंसर इज सिंपल. द आंसर इज कि द वैल्यू ऑफ imports will exceed the value of exports. Only then your balance will be in deficit, balance of payment will be in deficit, and vice versa. If the value of exports exceeds the value of imports, you will find that you have a surplus balance of payment, right? So surplus balance of payment का मतलब गोल्ड आ रहा है आपके पास, गोल्ड is coming in, और डेफिसिट का मतलब गोल्ड आपके पास से जा रहा है। अब यहां पर हमने एक पॉइंट यूज किया, टर्म यूज किया, कॉस्ट प्राइस स्ट्रक्चर। कॉस्ट प्राइस स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉस्ट प्राइस स्ट्रक्चर क्या है? ये कॉस्ट प्राइस स्ट्रक्चर, जिस देश में डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, उस देश में आप ये पाएंगे कि कॉस्ट प्राइस स्ट्रक्चर हाई है। कॉस्ट प्राइस स्ट्रक्चर क्या है? हाई। मतलब वहां पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन जहां पे आप देख रहे हैं कि सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वहां पर कॉस्ट प्राइस स्ट्रक्चर लो है। कॉस्ट प्राइस स्ट्रक्चर क्या है? लो। तो लो कॉस्ट प्राइस स्ट्रक्चर के साथ वहां पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं होगा, चीजें सस्ती होंगी, डिमांड हो रहा है, आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे, प्रोडक्शन करना आसान होगा, क्योंकि आपका कॉस्ट कम लग रहा है ना। तो जब आपका कॉस्ट कम है तो मार्केट में आप सप्लाई भी कम प्राइस पे कर पाएंगे, है ना। आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पे सप्लाई कर पाएंगे। तो जब आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मार्केट में इंटरनेशनली सप्लाई करेंगे, तभी तो लोग आपसे खरीदेंगे। यस नो? अगर आपके देश में खुद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा है, आपको खुद ज्यादा कॉस्ट पे प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, ज्यादा आपका इनपुट कॉस्ट है, तो आप उसको इंटरनेशनल मार्केट पे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जब आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पे सप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, तो एक्सपोर्ट्स आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, अब आप देखिए, आपको तो ये मैंने समझा दिया एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, लेकिन इंपोर्ट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? इंपोर्ट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में एक चीज पढ़ते हैं, मेक और बाई डिसीजन। मेक और बाई कहने का मतलब, इज इट वाइज टू प्रोड्यूस और इज इट वाइज टू बाई? अगर मेरे इकोनॉमी में प्रोडक्शन कॉस्ट ही महंगा है, इसलिए बेटर नॉट टू प्रोड्यूस बट टू इंपोर्ट।
बट टू इंपोर्ट। एक यहां पे आप देखिए कॉस्ट प्राइस का इफेक्ट कहां तक गया। एक तो आपका एक्सपोर्ट कम हो गया क्योंकि इंटरनेशनली आप बहुत ये इनकॉम्पिटेंट हो गए प्राइस को लेके। दूसरा, आपने अपनी इकोनॉमी में बढ़े हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को परेशान होके आपने प्रोडक्शन करने का फैसला बंद कर दिया। आपके वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज खत्म हो गई, आप उसको कंपनसेट करने के लिए इंपोर्ट करेंगे। एक तो एक्सपोर्ट कम और दूसरा इंपोर्ट ज्यादा, तो स्वाभाविक सी बात है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, डेफिसिट होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होगा, और ये सिलसिला अगर चलता रहा तो एक विशेष सर्कल में ये तब्दील हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म कर जाएगा, और ये आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। और उसको कम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपको गोल्ड फ्री करना पड़ेगा, गोल्ड को इंटरनेशनल मार्केट में बेचना पड़ेगा, जिससे आपके पास एक गोल्ड का आउटफ्लो हो। इज इट क्लियर? तो ये जो कॉस्ट प्राइस स्ट्रक्चर है, ये लिखने में सिर्फ ऐसे ही लग रहा होगा कि कॉस्ट प्राइस स्ट्रक्चर, लेकिन बहुत पावरफुल, सारा खेल इसी का है, कॉस्ट प्राइस स्ट्रक्चर। समझ आ गया? चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।